हमने किस चीज को देखा है. सो वी लर्न अबाउट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर एंड इंस्टीट्यूशन में क्या डिफरेंस होता है. ट्रेडिंग स्टाइल, यू कैन रीड दिस इफ यू वांट. कि बेसिक ट्रेडिंग स्टाइल का डिफरेंस है. ट्रेडिंग स्टाइल इज डिफरेंट बिकॉज इन्वेस्टर जो द बिग प्लेयर्स इन्वेस्ट फ्रॉम फॉर समवन एल्स एंड स्मॉल प्लेयर यूज देयर ओन मनी. ठीक है. एंड इन्फ्लुएंस ऑन मार्केट, इंस्टीट्यूशंस हैव मोर इन्फ्लुएंस, they have more purchasing power, they have more investment capabilities, and they have better expertise, and obviously they have better resources also. ठीक है. And now coming to liquidity part, we learned about liquidity. We have two kind of liquidities. First, we have external liquidity. Second, we have internal liquidity. And what we discuss is that prices move from one liquidity to another. In general, prices go from external to internal and internal to external. But it can also go from external to external and internal to internal. It totally depends because it's a liquidity game only. This is liquidity. We discussed the kind of liquidity that we have. In external liquidities, we have highs and lows, previous days highs and lows, swing highs and lows, daily, monthly, weekly, and equal highs and lows. As we discussed, these are all liquidities. These are waiting for to be tapped. And then we have internal liquidity like demand zone and supply zone, imbalances that we discussed, very important topic, imbalances, trend line liquidity, and last we discussed discount and premium zones. Okay, so I'll quickly explain you this. Now, like I discussed, this is a price action. Just suppose we have this price action and we have generated a liquidity here, and this high is liquid. It is waiting for to be tapped. Now what happens is market give us a wick. We got wicked out here, and now market is traveling down. And these all areas, ये जितने भी areas हैं, these are all liquid areas. We have liquidity here because we have stop losses here. These are all stop losses. So this is a trend line liquidity. This entirety is trend line liquidity. Then market will capture all this liquidity. Then internal liquidity is tapped. This is all internal liquidity. Internal liquidity is tapped. Now what will market do? Market will target external liquidity. Where do we have external liquidity? At this double top, whatever double top you call it, at this double top or equal highs, I said. At this equal high, we have external liquidities. So this is how market travel. First, it triggered external liquidity, then went to internal liquidity. Then from internal liquidity, it went to external. This is how market moves. I hope this is clear, Krishna. Like we have this. Do we have some zone? We have some zone from here. Okay. Just suppose we have some zone from here and like just take this zone. Okay, we have this zone, market came to this zone, and then we have some liquidities here. Okay, we have trend line liquidities here, market is traveling down. Same almost same concept that I was teaching you on line charts. We have bearish market here, we have stop losses here, market get into this liquidity, internal liquidity, and then triggered all the external liquidities. And after triggering all the external liquidities, it is targeting another external liquidities. This is how market moves. I hope this is clear. Okay, and same thing is happening here. Market triggered this external liquidity and then went to trigger another external liquidity. So it happens in market all the time. It's just the mechanics of market. I hope this is clear. Guys, don't focus on the words. Don't focus on external as a word and internal as a word. It's not gonna help you. Just focus on where stop losses are. Just forget about external and internal for that matter. Just focus on where the stop losses are. You know, if market is making a high here, okay, market is making a, how do we know that market is making a high? Just suppose that we have this candle. I'll give you the example on charts only. Now we know this is a high. Why is this a high? Because market made a high. This candle made a high, and the previous candle's high is lower than this. इस कैंडल का जो हाई है वो प्रीवियस कैंडल के नीचे है, और जो नेक्स्ट कैंडल का हाई है वो भी इस कैंडल के हाई से नीचे है. तो
इसने एक ऐसा जोन क्रिएट करा जो इसके आसपास कोई नहीं आया, तो ये हमारा एक स्विंग हाई जनरेट हो गया यहाँ पे। दिस स्विंग हाई इज लिक्विड। सिमिलरली जो यहाँ पे लो इसने जनरेट करा, दिस इज ऑल्सो लिक्विड। ये हमारा स्विंग हाई स्विंग लोज है, ये दिस इज स्विंग हाई, दिस इज अ स्विंग लो, दिस इज स्विंग हाई। तो जितने भी स्विंग हाई एंड स्विंग लोज होते हैं, जैसे हमने डिस्कस करा, इसके नीचे अगर यहाँ से कोई बाइंग कर रहा है, हम करते होंगे बिना स्टॉप लॉस के बाइंग, बट लोग स्टॉप लॉसेस के साथ बाइंग करते हैं, बड़े प्लेयर भी करते हैं, साइकोलॉजिकल हो या फिर क्या कहते हैं डेटा ड्रिवन हो सकता है कि दे वेट फॉर डेटा टू टेल देम कि यहाँ पे अब हमारा प्राइसेस हमारे बाइंग पॉइंट के नीचे आ गया, हम यहाँ पे सेल करना है। हम नॉट सेइंग कि वो ऑर्डर डाल के छोड़ देते हैं, बट दे वांट पुट ऑर्डर हेयर, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर पुट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉसेस हैं, ये हमेशा ट्रिगर होंगे। सिमिलरली अब जैसे हमने यहाँ पे जो जोन देखा था, हमने देखा यहाँ पे स्विंग हाइज हैं, जितने भी स्विंग हाइज हैं, ये स्विंग हाई जो टेस्टेड नहीं है, इनको कभी टेस्ट नहीं करा गया। इसने स्विंग हाई बनाया, कभी दोबारा मार्केट इसके पास नहीं है, स्विंग हाई बनाया, कभी दोबारा नहीं आई, स्विंग हाई बनाया, कभी दोबारा नहीं आई, स्विंग हाई बनाया, कभी दोबारा नहीं आई। तो ये क्या है, यहाँ पे सारे स्टॉप लॉसेज हैं। यहाँ पे जब भी स्टॉप लॉसेस जनरेट हो रहे हैं, ये ट्रिगर होंगे, क्योंकि यहाँ पे कभी ना कभी फुलफिलमेंट आएगी। जैसे अब जैसे मान लो यहाँ पे एक चीज देखो बेसिक, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने कहाँ पे एंड करा है, देखो बिल्कुल एज टू एज, एज टू एज। इसको मैं मार्क करता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये हायर पॉइंट था, मार्केट ने बिल्कुल यहाँ पे टेस्ट करा है, फिर इसके बाद नीचे मूव करा है, फिर इस हाई को टारगेट करा है। ये इसी तरीके से मार्केट ट्रैवल करती है। अब आप देखो कि यहाँ पे किस कैसे कैसे मूव आते हैं। अब जैसे ये वाली लिक्विडिटी थी, इस वाले हाई पे इसने ट्रिगर करा, हमने एक्सटर्नल इंटरनल टू एक्सटर्नल देख लिया, एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल देख लिया। अब हम जाते हैं इंटरनल टू इंटरनल लिक्विडिटी। अभी कहीं ना कहीं ये इंटरनल है, क्योंकि एक्सटर्नल यहाँ तक है, यहाँ पे ट्रिगर करा, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ पे हमने ये देखा ये डिमांड एरिया है, जो एक इंटरनल लिक्विडिटी है, इसमें ट्रिगर करा, फिर यहाँ पे इंटरनल से फिर ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ पे गया। डोंट वर्क ऑन द वर्ड्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वर्क ऑन कि कहाँ पे ऑर्डर्स हैं, वेयर डू यू हैव द ऑर्डर्स, वेयर डू यू हैव द स्टॉप लॉसेस। In this area we have the orders to be fulfilled, we have pending orders here. In these areas we have stop losses, we have stop loss orders here. So wherever we have the orders, we have liquidity there. All right, I hope this is clear. I'll just mark this here if you want. I'll just mark this here. Just suppose we are talking in terms of this leg. We are in this leg. From this low, from this very low to this very high. ठीक है, we are in this leg. Just forget about this moment. So if you have any liquidity in between this area, in between this area, then it's the internal liquidity. And if you have any liquidity outside of this area, then that's called external liquidity. That's it. That's it. There is nothing extra about this, and this is all that you have to learn about liquidity. इससे ज्यादा कुछ भी जानने की कोशिश करोगे, you will confuse yourself, because you'll go into words again. Like in traditional trading, what are you doing? You are focusing on words, you are focusing on names, candle names, pattern names. You are focusing on that, you're not focusing on the intent. So I want to make sure that you are focusing on intent. Just focus on intent, that we have orders here. In internal liquidity usually you will have pending orders. Like यहाँ से हमारी just suppose this is a demand area, यहाँ से डिमांड एरिया था, यहाँ से बाइंग आनी थी, जैसे अभी हमने चार्ट पे देखा था, जैसे अभी हमने चार्ट पे देखा था, ये एरिया है, यहाँ पे हमारी डिमांड है, यहाँ से मार्केट ने सेल करने की कोशिश करी, यहाँ से बायर्स है, यहाँ पे डिमांड आई, तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर पेंडिंग है, सारे ऑर्डर फुलफिल नहीं हुए। यहाँ पे देखो आपको फेयर वैल्यू गैप से भी दिखेगी, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हमारा सारे ऑर्डर फुलफिल नहीं हुए, तो पेंडिंग ऑर्डर्स है। यहाँ पे मार्केट दोबारा आएगी, उन पेंडिंग ऑर्डर्स को ट्रिगर करेगी, फिर यहाँ से मूव करेगी। वेयर एज जो जितने भी ये हाइज एंड लोज हैं, यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉसेस हैं, लोग अपने पोजीशन को सेव करना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर इसके अगेंस्ट आ रही है, हमें एग्जिट करना है, यहाँ पे ऑर्डर्स लगा के बैठे हैं, उनके ऑर्डर्स अगर ट्रिगर हो रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो गई।
हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, आई होप दिस इज क्लियर। हमने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जाना, व्हाट इज वीक हाई, स्ट्रॉन्ग हाई, ब्रेक ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये सब चीजें हम जान चुके हैं। हमें पता चल चुका है कहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, कहाँ पे हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। ऑल राइट। एंड एफवीजी, यस एफवीजी, हम सब हमने तीन टाइप ऑफ एफवीजी जाने कि फर्स्ट वी हैव फेयर वैल्यू गैप, देन वी हैव वॉल्यूम इम्बैलेंस, देन वी हैव प्राइस इम्बैलेंस। आई होप दैट इज क्लियर। ओबी एंड ऑर्डर ब्लॉक्स दैट वी हैव मार्क्ड, एंड डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन भी मार्क कर लिया। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो, हमने बेसिक बेसिक समझ लिया है। चलो अब आगे चलते हैं। अब आप लोगों ने ये चीज तो देख लिया, अब थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट देखते हैं। अब आप में